मेरे प्यारे students, welcome to Mathological. This is the 29th session of our CAT DILR 100 series. In this series, we are doing total 100 DILR sets for CAT examination, and this is the 29th session. Start करते हैं, and if you have not already subscribed, then make sure to subscribe to the channel. Also press the bell icon और साथ में session को भी like कर दें. So this is the set for today, followed by 5 questions. So pause the video, attempt the set yourself first, then only watch the solution. So I believe that you must have attempted the set. Now let us read the case set first. So 10 managers Aman, Bhanu, Gaurav, Dev, Isha, Zakir, Hari, Teja, Ira, and Jatin were among 100 participants who attended a 2-day professional summit featuring 4 workshops: FinTech, AI Ethics, Green Energy, and Biohealth. Each workshop was conducted once per day across 4 consecutive slots: slot 1 at 9 am, slot 2 at 11 am, slot 3 at 2 pm, and slot 4 at 4 pm. Every participant attended one workshop per day and attended different workshops on the 2 days. One workshop on every day and different workshops on 2 days. On day 1, the schedule was from slot 1 to 4 AI Ethics, FinTech, Green Energy, and Biohealth, respectively, and no workshop was held in the same time slot on both days, and FinTech was held earlier on day 2 than it was on day 1, and AI Ethics was held last. So schedule हम form कर सकते हैं for the 2 days. 4 slots are there: S1, S2, S3, and S4. And schedule on day 1 is, first of all, we have AI Ethics, then we have FinTech, FT in short, then Green Energy, GE, and finally Biohealth. And on day 2, FinTech was held earlier. So since FinTech is held in slot 2 and day 1, so the only available slot that is earlier is slot 1. So FinTech must be held in slot 1. And AI Ethics workshop was held last. And no workshop was held on the same time slot. So GE, Green Energy workshop, cannot be held in slot 3, so must be held in slot 2. And finally, last one, Biohealth must be held in slot 3. So this will be our schedule for the 2 days for the workshops. Additionally, question is mentioning that among the 10 managers, 4 each attended Biohealth and Green Energy on day 1. So on day 1, 4 of the managers attended Green Energy workshop. ठीक है, out of the 10 managers given. Okay, total participants कितने 100 है. Okay, so among the 10 managers, 4 attended Biohealth and 4 attended Green Energy workshop. And the remaining, out of the remaining, 1 each attended FinTech and AI Ethics on day 1. So 1 attended AI Ethics and 1 attended FinTech. Okay. During the summit dinner on day 2, 10 managers were seated around a rectangular table in 2 parallel rows of 5 seats facing one another. Row 1 faced north and row 2 faced south. All those who attended Green Energy workshop on day 1 sat together in row 1, while all those who attended the Biohealth workshop on day 1 sat together on row 2. So that implies there are 2 rows, and row 1 is facing north, while row 2 is facing south. So for the row facing north, left and right will be like this, and for the row facing south, left and right will be like this. There are 5 persons each on both the rows. Additionally, given हमें क्या है कि those persons who attended biohealth workshop were seated together. ठीक है, so they were seated together. They sat together. Like all 4 persons who have attended biohealth workshop, all 4 persons sat together in a bunch. If there are 5 seats in row 1 and 5 seats in row 2, so out of the 5 seats, 4 seats are occupied by in row 1 by Green Energy workshop attendants on day 1. Isn't it so? अब वो चारों के चारों साथ में बैठेंगे. So either they will be on these 4 seats, and this seat will be for some other person who attended one workshop. So either it could be AI attender or FT attender, FinTech attender. ठीक है. So either these 4 seats will be occupied by Green Energy or first 4. So end points पे हमारे पास और the either the left hand or the right hand पे there will be a person who will be sitting or who has attended AI workshop or FT workshop. Same logic for the row 2 also. Either last 4 will be occupied by biohealth attenders or first 4 will be occupied by bioattenders. Biohealth attenders क्या है पार्ट क्लियर है. यहाँ तक बात समझ आती है. अब क्वेश्चन की कंडीशंस को पढ़ते हैं और अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं. फ्रेश पेज पे एक बार फिर से बनाते हैं डायग्राम रोज का और फिर सॉल्व करते हैं इसको. तो रो 1 and रो 2, left and right on both, and then 5 persons are there.
Okay, and there will be 4 persons from green energy on together on row 1 and 4 persons who attended biohealth in row 2. Now, first statement, Aman sat at the left end of the row 1. Okay, and Aman attended green energy workshop on day 2. Okay, so Aman sat in row 1. So Aman either might have attended green energy workshop on day 1 or some other workshop. So that some other workshop could be AI workshop or fintech workshop. But definitely question is saying that Aman attended green energy workshop on day 2. So if Aman has attended green energy workshop on day 2, so Aman cannot attend the same workshop on day 1. So day 1 पे green energy workshop तो अमन ने attend नहीं किया होगा. So that implies Aman has either attended AI workshop or fintech workshop. And then next 4 seats will be occupied by green energy attenders on day 1. Okay, so that is again. Bhanu and Zakir sat together and they both attended biohealth workshop on day 2. So if by the same logic, if Bhanu and Zakir both have attended biohealth workshop on day 2, so they cannot attend a biohealth workshop on day 1. And they both are sitting together, so they both must be on the same row. Must be on the same row. And if they've not attended a biohealth workshop on day 1, okay, they have not attended a biohealth workshop on day 1, so they cannot be in row 2. Because row 2 mein there will be only one person who has not attended a biohealth workshop. Okay, but these two have attended biohealth workshop on day 2. So both of these have not attended biohealth workshop on day 1. So they must be in row 1. क्या ये बात क्लियर? और रो 1 में साथ में बैठे हुए भानु एंड जाकिर. दे आर सीटेड टुगेदर. अब पहले भानु है पहले जाकिर है, दैट वी हैव नो आइडिया, बट दे आर सीटेड टुगेदर. भानु sat directly opposite the manager who attended AI ethics workshop on day 1. So Bhanu is seated directly opposite the person who attended AI ethics workshop. अब AI ethics workshop वाला person will be at the end point. So either he will be at this position or he will be at this position. But if he is at this position, तो अमन होगा opposite. But question कह रहा है Bhanu is opposite that person. So that implies that AI ethics workshop person must be on this position. The person who attended AI ethics workshop on day 1 must be on this position, and then Bhanu will be on this position. So if this is Bhanu, this must be Zakir. So Bhanu and Zakir का place तो fix हो गया. ठीक है. So this statement is done. This statement is done. And additionally, अभी तक हमें क्या पता चला? Green energy workshop on day 2 by Aman. So Aman has done green energy workshop on day 2. And Bhanu and Zakir have attended biohealth workshop on day 2. Okay. Next statement. So Gaurav attended fintech workshop on day 2 and sat to the immediate left of Dev. So Gaurav and Dev are seated together, and Gaurav is to the left of Dev. And Gaurav attended fintech workshop on day 2. So इससे हमें कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा अभी. Gaurav and Dev can be in row 1 or row 2 because row 1 में भी हमारे पास दो spaces available हैं. So Gaurav and Dev can be here or they can be in row 2. Neither Gaurav nor Dev was seated at an extreme end of any row. So Gaurav and Dev cannot be in this position. They cannot be in last position either. Okay. Next, Teja attended green energy workshop on day 2. So Teja must not have attended green energy workshop on day 1. Teja attended green energy workshop on day 2 and sat directly opposite Hari. So that implies that Teja must be in row 2 for sure. Opposite Hari. Okay. And Gaurav and Dev are seated together. So they can be in row 1 और row 2. अभी तो हमें कुछ भी for sure पता नहीं है. ठीक है. So अब आगे की बात करते हैं. तेजा का काम हो गया. और next, 5 out of 10 managers attended fintech workshop on day 2. Fine. So 5 attended fintech workshop on day 2. Next, Ira and Jatin sat in different rows, and Ira attended fintech on day 2. If Ira and Jatin have been seated in different rows, so one of the Ira and Jatin must be out of these two locations. Or basically, one of Ira and Jatin has attended green energy workshop on day 1. Okay, so must be in this location. And if that is the case, so Gaurav and Dev, since they are seated together, they cannot be in this location because यहाँ पे एक ही place available बचेगा. So Gaurav and Dev must be in row 2. And if they are in row 2, so in row 2 हमारा left और right shift कर रहा है different direction में है as compared to row 1. और question कर रहा है Gaurav attended fintech and sat to the immediate left of Dev. So immediate left of Dev. So Dev के left में will be Gaurav. This will be the scenario. ठीक है. They cannot be at the end points. तो end points में नहीं होंगे तो either it will be that this is Dev and this is Gaurav, or this is Dev and this is Gaurav. These two places are possible. ठीक है. साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि तेजा इज सीटेड अपोजिट हरी एंड तेजा इज डेफिनेटली इन रो 2 एंड सो हरी मस्ट बी इन रो 1. अब यहाँ पे सिनेरियो क्या बन सकता है? सो तेजा और हरी के लिए क्या हो सकता है? हरी कैन बी ईदर इन दिस लोकेशन और इन दिस लोकेशन बिकॉज ओनली दीज टू प्लेसेस आर पॉसिबल फॉर हरी. तो इन दैट केस तेजा विल बी ईदर हियर और हियर. अब तीनों को बैठाने में तेजा, देव एज वेल एज गौरव.
ठीक है, सो अगर हमने तेजा को इस प्लेस पे सीटेड करा दिया, तब तो देव एंड गौरव कैन बी इन दीज टू प्लेसेस, बट इफ तेजा इज सीटेड हियर, देन Dev must be seated at the endpoint, which is not possible. So that implies that Teja must be at this location for sure, and hence Hari must be at this location for sure. And then in that case, this will be Dev and this will be Gaurav. Okay. So Teja, Dev, Gaurav, and Hari are placed. अब एक person रह गया है in this last location. That must be either Ira or Jatin. So at this location, we will be having either Ira or Jatin. Because Ira and Jatin में से one person is sitting in this particular location. And Ira attended FinTech on day 2. Okay. So Ira attended FinTech on day 2. Then Jatin attended a workshop on day 1 that only Isha attended on day 2. Jatin attended a workshop on day 1 that only Isha attended on day 2. तो day 2 की वर्कशॉप्स कौन कौन सी हैं, हमारी क्या क्या लिस्ट आ गया हमारे पास ऑलरेडी कि ग्रीन एनर्जी वर्कशॉप अटेंड किया है अमन ने. इज देयर एनी अदर पर्सन हु हैज अटेंडेड ग्रीन एनर्जी ऑन डे 2? तो फिनटेक में मिल गया हमको ग्रीन एनर्जी. यस, तेजा अटेंडेड ग्रीन एनर्जी ऑन डे 2. तो तेजा इज ऑल्सो देयर हु हैज अटेंडेड ग्रीन एनर्जी ऑन डे 2. तो अमन एंड तेजा हैज अटेंडेड ग्रीन एनर्जी ऑन डे 2. देन भानु एंड जाकिर हैव अटेंडेड बायो हेल्थ ऑन डे 2 और 5% अटेंडेड फिनटेक ऑन डे 2. सो दैट इंप्लाइज एआई अटेंड करने वाला एक ही पर्सन होगा ऑन डे 2, and that must be who? That must be Isha. So Isha must have attended AI workshop on day 2, and that must be a workshop attended by Jatin, which is AI ethics workshop. AI workshop Jatin must have attended on day 1, so Jatin must be at this location because AI workshop attend करने वाला person was at this location, and hence Isha कहाँ पे आएगी? Isha cannot be here because यहाँ पे Ira आ जाएगी, and then Isha will be at this location at the extreme end in row 2. तो सारे के सारे प्लेसेस हमारे फिक्स हो गए. अब आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन कौन सा वर्कशॉप किसने अटेंड किया. ठीक है, सो फॉर डे वन AI ethics workshop, one person is Jatin. For fintech workshop, one person, that is now Aman for sure. That is Aman. 4 persons who attended green energy workshop, those are H, I, Z and B. And 4 persons who attended biohealth workshop, those are E, T, D, G. D and G. 2 attended green energy on day 2, that is A and T. 2 attended biohealth workshop are B and Z, and ईशा अटेंडेड AI वर्कशॉप. बचे हुए 5 हमारे अटेंड करेंगे फिनटेक वर्कशॉप. तो कौन कौन से 5 हमारे रिमेनिंग रह गए हैं जो अटेंड करेंगे फिनटेक वर्कशॉप? दोज 5 आर फिनटेक ऑन डे 2. दोज 5 विल बी ए हो गया, बी हो गया, देन ए बी, जी डी ई. सो जी डी ई, जी एंड डी बचे हुए रह गए थे. देन ई हो गया, इसके बाद में बचे हैं जेड, एच, टी, आई एंड जे. तो जेड हो गया, एच, देन टी हो गया, देन आई एन जे. तो जी डी एच आई एन जे हैव अटेंडेड फिनटेक वर्कशॉप ऑन डे 2. तो ये पूरा हमारा सिनारियो बन गया, शेड्यूल बन गया, अरेंजमेंट बन गया. अब क्वेश्चंस पे चलते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मैनेजर्स अटेंडेड बोथ ग्रीन एनर्जी एंड फिनटेक वर्कशॉप? बोथ ग्रीन एनर्जी एंड फिनटेक. तो इधर ग्रीन एनर्जी ऑन डे 1 होगा. ठीक है, ग्रीन एनर्जी ऑन डे 1, फिनटेक ऑन डे 2, या वाइस वर्सा कि फिनटेक ऑन डे 1 एंड ग्रीन एनर्जी ऑन डे 2. दीज टू मस्ट हैव अटेंड. तो किसने किसने अटेंड किया है? ग्रीन एनर्जी एंड फिनटेक बोथ. So fintech on day 1, that is only Aman, and Aman is attending green energy on day 2. So Aman is definitely one person. Fintech on day 1. So Aman is the person, only person who has attended fintech on day 1 and green energy on day 2. And then vice versa, green energy on day 1 and fintech on day 2. So green energy के कौन से? H, I, Z, B. So out of H, I, Z, B, H and I have attended fintech on day 2. So H, I and A, there are total 3 persons who attended both green energy and fintech workshops. Answer is total 3 are there. ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, which of the following neither attended fintech nor attended green energy workshop? Neither fintech nor green energy. जतिन, देव, ईशा और नवदीप. सो पहले जतिन, देव और ईशा का आइडेंटिफाई करते हैं. क्या इनमें से किसी ने फिनटेक और ग्रीन एनर्जी दोनों ही अटेंड नहीं किया? तो जतिन, देव एंड ईशा. ठीक है, सो ईशा और इरा में ध्यान रखना, ईशा ई से स्टार्ट हो रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना है वहां पर. तो जतिन एंड देव एंड ईशा. सो ईशा हैज अटेंडेड एआई एथिक्स ऑन डे 2 और डे 1 पे ईशा ने क्या अटेंड किया? डे 1 पे ईशा ने अटेंड किया बायो हेल्थ. तो ईशा इज द आंसर. दैट ईशा हैज नॉट अटेंडेड नीदर वर्कशॉप्स. व्हाइल जतिन एंड देव के लिए देखें तो जतिन हैज अटेंडेड एआई एथिक्स वर्कशॉप ऑन डे 1, बट जतिन हैज अटेंडेड फिनटेक ऑन डे 2. एंड सिमिलरली जतिन के अलावा और ऑप्शन क्या था हमारा?
देव, तो देव के केस में देव हैज अटेंडेड बायो हेल्थ ऑन डे 1 बट देव हैज अटेंडेड फिनटेक ऑन डे 2, तो ये दोनों तो आंसर डेफिनेटली नहीं होंगे. Okay, third question, how many managers attended their workshops in the same time slot on both days? So either on both days they will be attending the workshop on slot 1 or slot 2 or slot 3 or slot 4. Slot 1 के contestant कौन कौन से हैं? Slot 1 पे we have Jatin on day 1. So Jatin has attended slot 1 on day 2 also because fintech workshop attend किया, तो Jatin is definitely the contender on slot 1. Slot 2 के लिए we have Aman on both days. So yes, Aman is there on slot 2. Then slot 3. Slot 3 पे we have HIZB, out of which Z and B are there. So Zakir and Banu. And for slot 4, we have E, T, D and G, out of which only E has attended on the same slot. So total कितने persons हो गए हमारे पास? 5 persons are there who attended workshops in the same time slot on both days. 5 will be the answer. And last question, which of the following managers attended fintech workshop? Last नहीं है, इसके बाद में एक और question है. Which of the following managers attended fintech workshop on day 2? तो fintech on day 2 पे कौन कौन persons थे हमारे पास? G, D, H, I, J. G, D, H, I, J. So H, I, J, option C will be the answer. ठीक है, ऑप्शन सी विल बी आवर आंसर. और कोई तो मैच नहीं कर रहा है. G, D, H, I, J. सो ईशा एंड हीरा ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज ईशा ने अटेंड नहीं किया है. हीरा ने तो किया है. अमन एंड हीरा, सो अमन ने नहीं किया, नॉट करेक्ट. ईशा एंड हरी, सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. सो आंसर ऑप्शन सी अपना हो जाएगा. नाउ लास्ट क्वेश्चन, last but definitely a very good question. Amongst all the 100 participants, 45, 30 and 15 attended fintech, green energy and biohealth workshop on day 1, while 20 each attended AI ethics, fintech and biohealth workshop. Every participant attended one workshop on each day. Then what could be the minimum possible number of participants who attended fintech workshop on day 1 and green energy workshop on day 2? minimum possible number क्या होगा, such that all constraints are considered. ठीक है, जो भी कंस्टेंट्स हमारे क्वेश्चन में थे अब तक, तो सारे कंस्टेंट को कंसिडर करते हुए व्हाट विल बी द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ दोज पर्संस, दोज पार्टिसिपेंट्स हु अटेंड फिनटेक ऑन डे 1 एंड ग्रीन एनर्जी वर्कशॉप ऑन डे 2. ओके, सो 5 वर्कशॉप्स थी हमारी फिनटेक. लिस्ट साथ में लिख लेते हैं अपना, क्या क्या थी हमारी. फिनटेक, एआई, ग्रीन एनर्जी एंड बायो हेल्थ. एंड डे 1 पे अटेंडेंस कितने हैं? 45 अटेंडेड फिनटेक, 30 अटेंडेड ग्रीन एनर्जी, 15 बायो हेल्थ. रिमेनिंग कितने बच गए? बिकॉज एवरी पार्टिसिपेंट अटेंडेड एक्जैक्टली वन वर्कशॉप, तो टोटल 100 होना चाहिए. 45, 30, 75 plus 15, 90. So 10 must have attended AI ethics workshop. This is for day 1. And for day 2, every participant, ठीक है. और day 2 पे हमारा नंबर क्या है? 20 each for AI, fintech and biohealth. So 20 and 20. And remaining कितने बच गए? 40. So 40 hours attended green energy workshop on day 2. Question is asking minimum possible number of those who attend fintech on day 1 and green energy on day 2. हमें minimize करना है इस नंबर को. We have to minimize this number. Okay, and we also know that जो पर्सन एक वर्कशॉप एक दिन अटेंड करेगा दूसरे दिन तो अटेंड ऑब्वियसली नहीं करेगा. सो दीज 30 persons who attend green energy workshop on day 1 cannot attend, these 30 cannot attend green energy on day 2. green energy on day 2, isn't it so? So definitely these are out. बच कितने गए फिर? आउट ऑफ 100 में से 30 तो आउट हो गए, तो रिमेनिंग आर 70 are remaining. So the 40 persons who attend green energy on day 2 must be out of these 70. But we have to minimize this number. हमें इसके और those who attend fintech workshop on day 1 इनके बीच का जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि दोनों अटेंड करने वाले, उसको मिनिमाइज करना है. तो 45 को बाहर रखते हैं. आउट ऑफ दिस 70, 45 मस्ट बी देयर. रिमेनिंग आर 25. अब ये रिमेनिंग 25 कौन से हैं? दोज पर्सन हु अटेंड ईदर एआई वर्कशॉप ऑन डे 1 और बायो हेल्थ ऑन डे 1. ठीक है, तो सारे के सारे 25 को हम यहीं पे प्लेस कर देते हैं. ऑल द 10 persons who attend AI workshop on day 1 must attend green energy on day 2, तभी मिनिमाइज होगा नंबर. और सिमिलरली ऑल 15 who attend biohealth workshop on day 1 must be attending green energy on day 2. So ये 25 तुमने साथ में प्लेस कर दिया. Still we believe we will be short by 15 number. 15 तो हमारा फिर भी शॉर्ट है, तो बचे 15 हमें चाहिए होंगे फ्रॉम दिस सेट ओनली. फ्रॉम दिस सेट ओनली, यानी कि फिर 15 हमें मिनिमम तो चाहिए ही चाहिए होंगे persons who attended fintech on day 1 and those must be there in the green energy workshop on day 2. Then only we'll be able to achieve a number of 40. क्या ये पार्ट क्लियर है? क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? बट क्या हमने सारे के सारे कंस्टेंट्स को कंसिडर कर लिया इस क्वेश्चन में? एक बार पॉज करके
take your time and think about it. Have we considered all the constraints of the question in this particular case? क्या ये मिनिमम पॉसिबल नंबर है? ये नंबर इससे छोटा होगा या और बड़ा होगा? अब देखो क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्मेशन 10 पर्सन्स का गिवन है, ठीक है? क्वेश्चन में हमें ये जो 10 मैनेजर्स हैं इनका इन्फॉर्मेशन तो गिवन है ना, और इन 10 मैनेजर्स में भी कुछ मैनेजर्स हमारे ऐसे होंगे, दोज हु हैव अटेंडेड फिनटेक वर्कशॉप ऑन डे 1, दोज हु अटेंडेड एआई वर्कशॉप ऑन डे 1, दोज हु अटेंडेड ग्रीन एनर्जी वर्कशॉप ऑन डे 1 एंड दोज हु अटेंडेड बायोहेल्थ वर्कशॉप ऑन डे 1 एंड सिमिलरली फॉर डे 2 आल्सो, ठीक है? क्योंकि मामला हमारा कहाँ पे फंसेगा कि हमने क्या किया, वी हैव अज्यूम्ड दैट ऑल 10 पर्सन्स हु अटेंडेड एआई वर्कशॉप ऑन डे 1 attended green energy workshop on day 2. Similarly, we have assumed that all 15 persons who attended biohealth workshop on day 1 attended green energy workshop on day 2. But can this be possible under the constraints given? Because हमें पता है कि there are 4 persons, 4 out of 10 managers who attended biohealth on day 1. अब उनका पोजीशन तो फिक्स है डे 2 पे, तो वो तो चेंज हम नहीं कर देंगे ना, ठीक है? वो तो चेंज नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली एआई वालों का भी पोजीशन फिक्स है, क्योंकि एआई अटेंड करने वाला डे 1 पे कौन था? एक पर्सन तो एआई अटेंड करने वाला भी था। अब इनका सिनेरियो हम देख लेते हैं, बायो हेल्थ डे 1 वालों का क्या सिनेरियो रहा? तो बायो हेल्थ दोज हु अटेंडेड ऑन डे 1 ईटीडीएनजी, so out of these ETDNG, how many actually attended green energy workshop on day 2? Only only T has attended, which is Teja. Only Teja has attended green energy workshop on day 2. So remaining 3 have not attended, neither Isha nor Dev nor Gaurav. ठीक है, only Teja has attended green energy workshop on day 2. तो ये 3 तो पहले ही शॉर्ट हो गए हमारे। तो यहाँ पे एक्चुअल नंबर हमारा बायो हेल्थ में क्या आया? 15 नहीं आ सकते, कितना नंबर आएगा? 15 माइनस 3 आ गया, 12 आएगा। एंड एक्चुअली एट मैक्स 12 कैन अटेंड, बिकॉज 3 तो पक्का नहीं कर रहे, वी आर श्योर, ठीक है? क्योंकि 4 में से 3 तो पहले आउट हो गए, तो वो तो नहीं कर रहे। अब एआई में भी देखते हैं, एआई में 1 पर्सन वाज देयर, दैट वाज आई गेस ईशा, नहीं दैट वाज जतिन, जतिन था। सो जतिन ने कौन सा वर्कशॉप अटेंड किया है ऑन डे 2? जतिन हैज अटेंडेड फिनटेक वर्कशॉप, फिनटेक वर्कशॉप अटेंड किया, तो जतिन इज आल्सो नॉट अटेंडिंग बिकॉज जतिन वाज देयर हु हैज अटेंडेड फिनटेक वर्कशॉप ऑन डे 2. तो डेफिनेटली जतिन इज आल्सो नॉट अटेंडिंग वर्कशॉप ऑफ ग्रीन एनर्जी ऑन डे 2. सो वो भी माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे नंबर, यानी कि दिस नंबर विल बी 9. तो 4 तो हम शॉर्ट हो गए। अब ये 4 एडिशनली हमें ऐड करना पड़ेगा इन दिस 15. सो अंडर दीज कंस्ट्रेंट्स, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन एडिशनली भी पता था इस क्वेश्चन के लिए, सो एक्चुअल आंसर विल नॉट बी 15 बट दिस विल बी एक्चुअली 19. सो वी विल बी नीडिंग एग्जैक्टली 19 पर्सन्स who will be attending fintech workshop on day 1 and green energy workshop on day 2. अब fintech जिन्होंने day 1 में एक्चुअल में अटेंड किया है हमारे केस में, वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि हमें fintech में 21 ऐसे मिल रहे हैं विच आर नॉट अटेंडिंग ग्रीन एनर्जी वर्कशॉप, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। fintech जिन्होंने अटेंड किया उन्होंने ग्रीन एनर्जी किया है कि नहीं किया है, क्योंकि उतना बड़ा नंबर हमारे पास है नहीं, ठीक है? सो वहाँ पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। कंस्ट्रेंट आ रहा था, प्रॉब्लम आता है सिर्फ एआई और बायोहेल्थ से, क्योंकि यहाँ के सारे पार्टिसिपेंट्स को हम अज्यूम कर रहे थे कि दे कैन अटेंड ग्रीन एनर्जी वर्कशॉप ऑन डे 2, बट दैट इज नॉट पॉसिबल अंडर द गिवन कंस्ट्रेंट्स ऑफ द क्वेश्चन. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन. क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्या समझ पाए उस क्वेश्चन? ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अगर फिर भी कंफ्यूज हो तो थोड़ा सा टाइम लेना, समझने की कोशिश करना, ठीक है? कि बेसिकली लॉजिक क्या है कि पहले हमने समझा कि मिनिमम पॉसिबल नंबर हो क्या सकता है, 15 आया, 15 आया, पर फिर हमने ये सोचा कि ऑलरेडी 10 मैनेजर्स के बारे में तो हमें इन्फॉर्मेशन पता है, ठीक है? वो तो हम चेंज नहीं करने वाले, वो तो ऑलरेडी फिक्स है, क्योंकि बाकी जिनका नहीं पता है वहाँ पे तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा, बट जो 10 का फिक्स है, फिर वहाँ पे हमने देखा कि आउट ऑफ दोज सम आर some managers have attended AI on day 1. अब वो कितने थे? 1 person was there, that was जतिन, बट जतिन ने तो अटेंड नहीं किया ग्रीन एनर्जी ऑन डे 2, तो जतिन तो माइनस हो गया हमारा, 10 नहीं अज्यूम कर सकते, 9 ही अज्यूम कर सकते हैं। सिमिलरली बायो हेल्थ में 4 पर्सन्स थे, अब उन 4 में से ओनली 1 हैज अटेंडेड ग्रीन एनर्जी ऑन डे 2, तो उनमें से भी जो 3 रह गए, ये बाकी ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, तो उनको ये माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 3 एंड 1 4 माइनस करना पड़ेगा, 25 में से 25 माइनस 4 बच गया 21, तो ओनली 21 वी कैन अरेंज फ्रॉम एआई एंड बायो हेल्थ ऑन डे 1. So remaining 19 have to be arranged from the fintech quota, from the fintech attenders. So definitely 19 will be the answer in this particular question. क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, सो दिस विल बी आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एंड आई बिलीव कि सारी बातें जो हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस की हैं, तो समझ में आएगी, मजा होगा सेशन को करने में। और अपना कमेंट जरूर फीडबैक सेक्शन में लिखना कि तुम्हें सेशन कैसा लगा और कितने क्वेश्चन तुमसे अपने एंड पे करेक्टली हैंडल हो पाए, ठीक है? और कितना टाइम लगा तुम्हें, दैट यू कैन ऑल्सो मेंशन. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, एंड इफ यू लाइक दिस सेशन देन मेक श्योर हिट द लाइक बटन एज वेल एज सब्सक्राइब टू द चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है, और बाकी सेशंस को भी जरूर चेकआउट कर लेना बाई सर्चिंग DILR100 ऑन द चैनल. That's all for this session. Bye bye. Take care and keep on.